Welcome back. We are in session 18. As usual, we start with some words. Karthik. Today we start with the sound patterns of UE. Okay? So, we are calling this word family as Jul-Sep, but there are several kinds of sounds that come here. Start from here. Argue, avenue, queue, due, issue, you, issue, pursue, queue, rescue, revenue, subdue. Okay. Divyansh. Tissue, undue, value, venue, virtue. Okay, wait. So, this is one sound of UE, that is U, okay? Value, venue, virtue. Next, the second kind of sound pattern, which is simply U. Accrue, glue, clue, dengue, glue, grew, gruesome, rue, Ru. rue, statue, sue, true. Good. Sparsh. Another third kind of sound, Ue. Well. Ue, yes. Cruel, duel, duet, fluency, fluent, fuel, Fuel, grill, quell, quench, yes. query, Query, quest, query, query, quest, squill, sequel, sequel, sequence, banquest, banquet, influence, and affluent, affluent. Fine. A fourth pattern here, guess, guest, guerrilla, guerrilla. 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 Okay, Akshat. The final sound pattern of UE, in which there is no sound. Antique, boutique, check, fatigue, Fatigue, leak, mosque, morgue, opaque, plague, rogue, technique, tongue, torque, unique, vague, watch, vogue. vogue. Vogue means fashion. Okay? And rogue means badmash. Okay? This was the sound of UE. And E with semivowels, E with W, E with Y. Akshat. Blue, brew, chew, crew, dew, drew, few, flew, grew, dew, new, news, sew, screw, Sparsh. skew, dew, stew, three, Few. new, curfew, nephew, sinew, steward. Just a minute. When you say these words, no, somehow many of you try to say as if it is EU. It is not EU, it is U. Okay? So, think of it not as, not so much as not like this. Okay? Think of it as this. Okay? Not new, but new. Okay. Divyansh. Word family key. Abby, Ellie, donkey, Donkey. hockey, honey, jockey, key, kidney, money, monkey. Okay. Pulley, turkey, valley, volley, Okay. And a little different sound pattern. grey, hay, obey, Obey. pray, Obey nahi. Obey. obey, pray, they, convey. Good. Sounds are not very difficult. Words are not very difficult. Okay. Fine. Earlier we had one lesson like this, in which
Here we had a lot of sentences in active voice, and here we had a lot of sentences in passive voice, showing the structure of both kinds. Okay. This was all for simple past, simple present, simple future. Okay. Now that we have done our lesson on continuous tense, so similar things we should have in continuous tense. So telling and being told. Okay. Divyansh, you read this as two sentences. Read two sentences separately. I am telling a story. I was telling a story. मतलब क्या है? मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ. पढ़ नहीं, सुना रहा हूँ. सुना रहा हूँ. या सुना रहा था. सुना रहा. ठीक है. अब जो है उसी चीज को मतलब न बदलते हुए यहाँ पर बोला जा रहा है पैसिव वॉइस में. सुनाओ एक बार. A story is being told by me. A story was being told by me. मतलब मैं एक कहानी सुनाई जा रही है या जा रही थी. मेरे द्वारा या मुझसे एक कहानी सुनाई जा रही है या सुनाई जा रही थी. ठीक है. ये इसको पढ़ो. We are telling Ravi. That's it. दूसरा वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब साफ है. मतलब We are telling रवि को बता रहे थे. हम लोग रवि को बता रहे हैं या बता रहे थे. ठीक है. ये कैसे बताया गया है? रवि is being told by us. रवि हमारे द्वारा बताया जा रहा है. बात वही है. ठीक है. हाँ कार्तिक. You are telling the fact. बस फुल स्टॉप. ठीक है. मतलब तुम सच्चाई. हाँ सच्चाई बता रहे हो. तुम सच्चाई बता रहे हो. ठीक है. ये सेंटेंस पढ़ो. The fact is being told by you. सच्चाई तुम्हारे द्वारा बताई जा रही है. इज टोल्ड होता तो होता है बताई जाती है या बताई गई है. इज बीइंग टोल्ड का मतलब है कि बताई जा रही है. ठीक है. इधर आ जाओ. यू आर टेलिंग स्लोली. मतलब तुम धीरे बोल रहे हो. तुम धीरे धीरे बता रहे हो. तुम धीरे धीरे बता रहे हो. ठीक है. यू आर टेलिंग स्लोली. इसका ये फॉर्म नहीं होगा जो इस सेंटेंस का हमने घुमा के ये फॉर्म किया था. हाँ उसका ये फॉर्म इस सेंटेंस का नहीं होगा, क्योंकि क्या बताया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है, वो इस सेंटेंस में है ही नहीं. तो यू आर टेलिंग हिम स्लोली अगर होता तो यहाँ पर आता है ही इज़ बीइंग टोल्ड स्लोली. ओके. लेकिन वो तो हिम तो यहाँ पर है ही नहीं. सच्चाई भी नहीं है, स्टोरी भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है. क्या बताया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है, वो मिसिंग है. तो इसलिए इसको घुमा के इस फॉर्म में तुम लिख ही नहीं सकते हो. ठीक है. हाँ दिव्यांश. पप्पू इज टेलिंग पीपल. मतलब पप्पू लोगों को बता रहा है. ठीक है. पीपल आर बीइंग टोल्ड बाय पप्पू. लोगों को पप्पू द्वारा बताया जा रहा है. ठीक है. इधर आ जाओ. दे आर टेलिंग नथिंग. वो कुछ नहीं बता रहे हैं. ठीक है. नथिंग इज बीइंग टोल्ड बाय देम. उनके द्वारा कुछ नहीं बताया जा रहा है. हाँ एकदम चुप्पी साधे हुए हैं. ठीक है. आगे अब सवाल में आ जाते हैं. ठीक है. इज पप्पू टेलिंग देम. क्या पप्पू उन्हें बता रहा है. आर दे बीइंग टोल्ड बाय पप्पू. क्या उन्हें पप्पू द्वारा बताया जा रहा है. ठीक है. पीपल आर नॉट टेलिंग डैट. लोग नहीं बता रहे हैं. पीपल वह नहीं बता रहे हैं. वैसा नहीं बता रहे हैं. या पीपल वो बात नहीं बता रहे हैं. ठीक है. पीपल लोग वैसे नहीं बोल रहे हैं. ठीक है. वह बात लोगों द्वारा नहीं बताई जा रही है. बिल्कुल सही. तो इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो दोनों तरफ से हैंडल कर लोगे. ठीक है. सीधे साइड से भी, उल्टे साइड से भी. ठीक. गुड. ओके. पहले क्वार्टर में हम लोगों ने देखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब आया था डू, है ना. दूसरे क्वार्टर में वही टाइप का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब हम लोगों ने देखा है बी. ठीक है. तो डू कैसा कैसा काम करता है, किस तरह से मदद करता है, और बी किस तरह से मदद करता है, ये हम लोगों ने देखा है. डू जो है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने में मदद करता है.
और बी जो है वो पैसिव वॉइस में बोलने के लिए थर्ड फॉर्म के साथ जोड़ के, या कंटिन्यूस टेंस में बोलने के लिए फिफ्थ फॉर्म जोड़कर इस दो काम के लिए बी मदद करता है। और कई बार डू बी को मदद करता है, कई बार बी डू को मदद करता है। हम लोगों ने ये भी एग्जाम्पल देखा था जिसमें कि डू खुद डू को ही मदद कर रहा था। ओके, ही डज नॉट डू दिस वर्क, वो ये काम नहीं करता है, ठीक है ना। उसी तरह से बी भी खुद अपने आप को मदद करता है, कभी कभी डू को मदद करता है, कभी कभी डू से मदद लेता है। तो पूरा स्ट्रक्चर देखो, verb do in support of another verb. Why did you shout? तुम क्यों चिल्लाए थे? Okay, so main verb is shout, and this do or the past form of do, did, is helping to ask this question. Okay, now see the verb do giving support to verb be. Do not be angry. If you wanted to say be angry, then this verb do would not come. Do is coming here to support be, to make a negative sentence. Do not be angry. Fine. Now see, be is coming on its own and not asking for the help of do. Other verbs in such situation will take the help of do. For example, if yes, I go, I do not go. Okay, I am angry, you don't say I do not am. Okay, be does not need the help of do in this kind of situation. When be is coming in its original form as be in sentences expressing request, instruction, order, there be is an ordinary verb. Okay, so there it takes the help of do in an ordinary manner. But where be is coming in one of its changed forms, are, am, is, was, were, in such situations be in that changed form does not need the support of the verb do. That gets its own negative directly, the way do takes. Okay, I am not angry. Okay. Now see how be helps other verbs. Verb be in support of another verb. We are called. So here be is coming and then the third form of a verb. So this support of be is given to the verb call to make it a sentence in passive voice. We are called, हमें बुलाया गया था. Or to the fifth form in order to make continuous tense. I am calling others. Verb be helping the verb call. So after the verb be, the fifth form is coming to make a continuous tense. Okay, I am calling others. Now here you have seen how the verb be takes the support of do. Even the verb do sometimes takes the support of be. You see, my work is done. Third form of do is coming here, which is in the adjective form. It is coming. Okay, and it is by the help of the verb be here you are getting a sentence in passive form, as with other verbs. Similarly, do here is operating like an ordinary verb and be is the helping verb. You see, again here he is doing his duty, fifth form of do. Do is appearing as ordinary verb, be is the supporting verb. Okay, so as be supports other verbs in third form and fifth form here, it is supporting do also in third form and fifth form. Okay, so this is the typical way be comes in support of other verbs. Okay, any questions on these things? क्या बच्चों, कोई क्वेश्चन है, सवाल नहीं? Okay. There was a question in one of the earlier sessions regarding how to build up the basic vocabulary. We have this issue of what gives students good practice. That was a teacher's question. That is, we are telling a few things regarding how to teach English well to students in a class, and so far as the issue of
learning of words and sentences are concerned, we are telling that practice new words and conduct the exercises with old words, simple words. Okay. So, the question is that there is a chicken egg problem here, that if the children do not know enough words, then how they make sentences. On the other hand, if they do not make sentences, then how do they get the practice of words, how do they learn words. So, how do we build the basic vocabulary based on which we can start some practice sessions. So, for that, in that session when the question came, we gave the answer based on a tactical arrangement which we have implemented in some of our classrooms. On the other hand, in our English proficiency program, we also try to build up a strategic solution to that problem, how to build up the basic background from which point this course one can take. And that strategic build up of the background for this EPP or PELT course we call as EPP module 0. And the motivation behind this is that the way typically in English proficiency program we give the courses, in that we find that there are some people, even adults, who have difficulty with the pace of instruction. On the other hand, a large segment of the class would not enjoy the course if the pace of instruction is slowed down. So, we developed an EPP module 0 which builds up the basic background in a strategic manner, in a systematic manner. And for that, in the first day of the class, we conduct a benchmarking through a simple checklist, in which we ask every student to read through a few words, and then we keep a track of how one reads those words, okay, how proficient the student is in reading very simple words. This is for absolute beginners. Okay. And apart from that, with some of the very simple words, we ask them to make some sentences, and through those simple exercises, we develop a rough idea of the prevalent background of the students in the class. And then on the day 1, we give them the letters in the cursive form, the way we started this particular course. And then second day onwards, we have a number of activities which are conducted in a very mechanical manner, because at that stage of learning, the role of intelligence is actually very small. The role of practice, exercise and patterns is stronger. Okay. So, in that scheme, we had most of the operations we had were oral, very little written work. So, we planned like this. We had reading of a simple text, a story kind of thing, very simple English. So, reading and oral interpretation 20 minutes, and this same story will continue over successive days. Okay. Then learning a new page of words, very simple words. It could be the shortlisted words of our own word families, or even before that it could be any other simple collection of words which the teacher feels suitable for her class at any particular point of time. So, learning a new page of words, and then learning a type of sentences, say 10 minutes, and then in that type of sentence, a lot of sentences in that type the teacher tells and tries to get the meaning from the students. And if students do not succeed in giving the meaning of some, then the teacher tells. So, this is almost like continuous mechanical pattern matching kind of exercise, which goes on for some time, say 10 minutes. And then the opposite of that, teacher fires another round of sentences in the common local language of that kind and invites the students to make the English of that. Okay. And this is partly through oral exercise and partly through board work. Okay. After this,
there are two small pieces of classwork, each of 10 minutes duration. First one is translation of a few same kind of sentences in Hindi to English. Okay. This is the only essentially written part on the part of the children, on the part of the students. And the second part of the classwork is making sentences with given words, the words which they have recently learned. This could be written or could be oral, depending upon the discretion of the teacher. Beyond this, there are two more things. One is correction of notes, primarily item 2, the new page of words which they have read, understood and made note of. Okay. So, the teacher is supposed to check their notes and see that their notes are right. This is important at that level, because if they have taken wrong notes and then from that wrong notes if they keep on learning, then a lot of wrong learning will take place. Okay. So, the teacher's responsibility here was to check through their notes, and if there are mistakes, if there are wrong way of writing, then a little consultation, editing or repeating as necessary. So, this is why this is ... because those students who have completed everything all right, completed everything correctly, they leave at this point, and those who need a little further advice, special care, special consultation, they can utilize this extra time. So, our typical session was 2 hours. This should be 110. This sum is not right. This addition is not right. This is 110. Okay. 1 hour 50 minutes actually, not 150 minutes. It is 1 hour 50 minutes. Okay. So, this is the sum of these are this 1 hour 50 minutes. Okay. So, 110 minutes and extra 10 minutes were left for this last piece. Okay. So, this was our strategic solution for building the basic background, after which we hope that a student, a learner can take up the EPP or PELT course in a reasonably confident manner. And our hope is quite well founded, because for this EPP module 0, in principle we do not put any time frame, because this goes on till the teacher feels that the EPP module 0 has succeeded on the students, okay, after which the students can take up our actual course. Okay. So, this was our strategic answer to the same question, to which a tactical answer I gave you in the earlier session. So, we have a little practice. Okay. Maybe we take an old word family and make some sentences. Divyansh, come. Yes. Okay. Make a sentence in continuous tense. Be plus 5th form. कोई पढ़ के सुनाओ अक्षत. आई एम वॉकिंग इन द फील्ड. इन ए फील्ड मतलब मैं एक मैदान में टहल रहा हूँ. मैं एक मैदान में टहल रहा हूँ. ठीक है. ओके दिव्यांश. टू मेक इट पास्ट, व्हाट डू यू हैव टू चेंज? एम को क्या करोगे? फाइन. तो एम के ऊपर जो है ना, एक लाइन खींच के उसके ऊपर वाज लिख के रखो. ओके. और अगर फ्यूचर करना हो तो क्या करोगे? कहाँ पर लगेगा? एम की जगह. तो एम के नीचे एक लाइन खींच के विल भी लिख के रखो. गुड. गुड. ठीक है. आई एम वॉकिंग इन ए फील्ड, आई वॉज वॉकिंग इन ए फील्ड, आई विल बी वॉकिंग इन ए फील्ड. वेरी गुड. अब इसका हम लोग नेगेटिव सेंटेंस करेंगे. अभी तक तुमने जो भी कहा है अब सब उसका उल्टा कहोगे. तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो. ठीक है. मैं मैदान में नहीं टहल रहा हूँ,
उसके लिए क्या करोगे? ठीक है, विल बी के आगे नॉट कहाँ पर? हाँ, ओके, विल नॉट बी, राइट. सो वाज के आगे, एम के आगे और विल बी के बीच में. ठीक है, ये झमेला है. ठीक है, विल बी दो टुकड़ा हो जाता है, उसके बीच में आके नॉट बैठता है. ठीक है, ये वाज, एम, विल बी तीनों मिटा दो. उसे कुछ करेंगे, ऑपरेशन करेंगे उसका. चलो आई भी मिटा दो. अब इसको हम लोग सवाल पूछेंगे और आई नहीं रखेंगे, अब यू कर देंगे सब्जेक्ट. ठीक है, सब्जेक्ट को यू कर देंगे और सवाल पूछेंगे. क्या तुम मैदान में टहल रहे हो? गुड. क्वेश्चन मार्क लगाओ. आर यू वॉकिंग इन ए फील्ड? क्या तुम मैदान में टहल रहे हो? पास करो इसका. पास करने के लिए क्या करोगे? नहीं नहीं, मिटाओ मैं, उसके ऊपर लाइन खींच के लगा दो. वेर यू वॉकिंग इन ए फील्ड? क्या तुम मैदान में टहल रहे थे? है ना. अगर फ्यूचर करना चाहो तो क्या करोगे? कहाँ पर लगेगा विल बी? करेक्ट, विल यू बी. विल बी जब दो टुकड़ा होता है तो एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर जाता है, ये झमेला है. ठीक है, विल यू बी वॉकिंग इन ए फील्ड. ठीक है, ओके. इसके पहले अगर कोई और वर्ड लगा के कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहते हो जिसमें कि येस नो में जवाब नहीं दिया जा सकता है, तो क्या करोगे? राइट. व्हेन, ये ठीक नहीं हुआ. व्हेन आर यू वॉकिंग, ये ठीक नहीं होगा. आर यू वॉकिंग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ही, अभी का टाइम है ही. वाई ठीक रहेगा. हाँ, और आर नहीं होगा. नहीं, आर ठीक है, आर ठीक है. वाई आर यू वॉकिंग इन ए फील्ड, ये ढंग का क्वेश्चन बना. तुम मैदान में क्यों टहल रहे हो? कोई कारण होगा तब ना. ठीक है, कार्तिक आओ. ठीक है, लिखो. थीफ. चेजिंग द थीफ. तुम हीरो हो. आई एम चेजिंग द थीफ. जेम्स बॉन्ड. I am chasing the thief. I का एक डॉट और फुल स्टॉप का एक डॉट. ब्यूटीफुल. I am chasing the thief मतलब पकड़. मैं चोर का पीछा कर रहा हूँ अभी. ठीक है, हाँ, मैं चोर का पीछा कर रहा हूँ. प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ठीक है, तुम जो बोल रहे थे कि मैं चोर का पीछा कर रहा था, वो भी हम लोग इसी में लगाना चाहते हैं. उसमें वो करना होगा तो क्या करोगे? एम की पर वाज. ठीक है, ठीक है. और वही काम तुम अगले 5 साल तक करोगे. ठीक है, तो 5 साल बाद के एक दिन की बात बता रहे होगे, तब क्या बोलोगे? हाँ बिल्कुल सही, ऊपर, उसको ऊपर लगा दो. गुड. आई एम चेजिंग ए थीफ. आई एम चेजिंग द थीफ. ठीक है, आई वॉज चेजिंग द थीफ. आई विल बी चेजिंग द थीफ. मानना पड़ेगा तुम भले जेम्स बॉन्ड हो, लेकिन वो चोर भी कोई कम नहीं है. तुम कितने जमाने से उसको चेज कर रहे हो, अभी तक पकड़ नहीं पाए हो. ठीक है, अब जो है तुम तंग आ जाते हो. ठीक है, और उसको चेज करना बंद कर देते हो. तो इसका नेगेटिव करो अब. नहीं नहीं, तुम लिखने की जरूरत नहीं है, तुम बोलो. उसको माइक दो, ऑन करके दो. हाँ बोलो. I am not chasing the thief. करेक्ट, आई एम नॉट चेजिंग द थीफ. ओके, तंग आ गए हैं. और पास्ट में I did not. I was not chasing the thief. आई वॉज नॉट चेजिंग द थीफ.
फ्यूचर में I will not be chasing the thief. करेक्ट, आई विल नॉट बी चेजिंग द थीफ, ठीक है, विल बी को छेद करके हटा के नॉट बीच में आके घुसेगा, ठीक, आई विल नॉट बी चेजिंग द थीफ। ओके, स्पर्श आ जाओ, इसको ले जाओ तुम, वहाँ से बोलना मैं जाओ मत, उसको काम है इसी पे, इसको ले जाओ ठीक से, हाँ और ठीक लिख देना, ठीक से मिटाओ नहीं, उसको वापस लिख दो, जो उसने गलती से मिटा दिया है उसको वापस लिख दो, सब रहेगा वैसे ही, तुम्हारे पास और काम है। इसी पे जो है ना मतलब यही रखोगे, ठीक, लेकिन सेंटेंस शुरू करोगे द थीफ से, सेंटेंस का मतलब वही निकलेगा, अभी भी तुम ही जेम्स बॉन्ड हो, मतलब पहले वो था अब तुम हो, ठीक है, लेकिन अब सेंटेंस शुरू होगा द थीफ से, ठीक है, मतलब वही रहेगा सेंटेंस का। द थीफ इज रनिंग, कहाँ, नहीं रनिंग एंड हटा, ये सब फालतू बात नहीं चलेगा, तो रुको यहां से हटाना चालू करो, अभी भी क्या सिखाया गया था, ठीक, आई है मी बन के है, ठीक है, चेजिंग बीइंग चेज्ड, थीफ इधर, ठीक है, द थीफ इज बीइंग चेज्ड बाय मी, ओके, पास्ट में क्या हो जाएगा, इसके नीचे एक लाइन देके वाज लिख के रखो, और फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये होगा क्या, सुनो सुनो, इसका फ्यूचर में क्या होगा, जो जवाब दे पाएगा उसको टॉफी मिलेगा, टॉफी नहीं मिलेगा, टॉफी किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्म फ्यूचर टेंस में होता ही नहीं है, ठीक है, ये याद रखने की बात है। अभी तक सब कुछ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ में हो रहा था, लेकिन ये फॉर्म फ्यूचर टेंस में नहीं होता है, क्योंकि इज वाज के जगह पे जो है अगर विल बी लगाएंगे तो उसके आगे एक और बीइंग है, ये सेंटेंस कभी सुना है, तभी तो कोई नहीं बता रहा है क्योंकि सबको अटपटा लग रहा है ना, द थीफ विल बी बीइंग चेज्ड, दैट साउंड्स पिक्यूलियर, दैट साउंड्स ऑकवर्ड, ये ऑकवर्ड सेंटेंस इंग्लिश में नहीं है, और ये इंग्लिश की एक कमजोरी है, दिस इज ए वीकनेस ऑफ इंग्लिश, दैट दिस स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट लैंग्वेज। अपनी भाषाओं में, हिंदुस्तानी भाषाओं में ये स्ट्रक्चर है। टीचर 5 बजे हम लोगों को पढ़ाते रहेंगे, द टीचर विल बी टीचिंग अस एट 5 o'clock। 5 बजे तुम लोग क्या करोगे, 5 बजे हम लोग शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाते रहेंगे, सेंटेंस साफ, मतलब साफ, इसका इंग्लिश बिल्कुल इसी फॉर्म में नहीं होगा, ओके। तो इसको जो है अगर अंग्रेजी में बोलना होगा तो बोलना यही पड़ेगा कि एट 5 वी विल बी टॉट बाय द टीचर, जो कि एक्चुअली सिंपल फ्यूचर है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में फ्यूचर में पैसिव वॉइस नहीं होता है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है, ओके, थैंक यू। डस्ट एंड चॉक, okay, so we stop here at this point, and next we continue with session 19 in the next class, and you must have noticed that we are very close to the completion of quarter 2 of the course, okay, thank you, see you again.